Welcome back to SK1X and we're back again with another video of mine, and we are basically going to discuss the harmonic oscillator for once again in this video, which is actually going to be the third part on the very same topic. तो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ओवर हार्मोनिक ऑसिलेटर फैक्टराइज करने की कोशिश किया था टू द हैमिल्टनियन ऑपरेटर, वेयर वी एक्चुअली विटनेस्ड इट, वी एक्चुअली सा इट कि इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, बट एट द वेरी लीस्ट जो कि हम लोगों ने किया was to express the Hamiltonian operator in terms of two other operators a plus and a minus caret, which are the raising and lowering operators, जिन्हें साथ में ladder operators भी कहते हैं क्योंकि they allow you to jump like the steps of a ladder between quantum states, between quantum stationary states of the harmonic oscillator. तो मेरे पास एक solution है, I can go to the next solution just by using these ladder operators with high and low energy values. तो एक चीज also we saw is that the energy values are actually discrete energy values, not continuous. Now in the second part we actually got the ground state solution for the Schrodinger equation for this thing, the ground state solution for the harmonic oscillator itself, and we saw what the energy for the ground state was. And now we are going to be looking at the excited states. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि what formulas we have gotten till now. H caret can be written as h bar omega, a plus minus caret, a minus plus caret, plus or minus half. उसके अलावा we saw the ground state solution, that is psi naught as a function of x is given by m omega or pi h bar to the whole power half, 1/4 exponential of minus m omega over 2 h bar x square, and this corresponds to an energy E naught, that is half h bar omega. उसके अलावा व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर मैंने ए कैरेट को ए प्लस कैरेट को यूज किया रेपिटेडली तो मैं हायर एंड हायर एनर्जी वैल्यूज एंड एक्साइटेड स्टेट्स पे जंप कर सकता हूँ. सो व्हाट वी कैन से नाउ इज कि जो हमारा nth स्टेशनरी स्टेट होता है, दिस कैन बी रिटन एज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट an फॉर दिस स्टेशनरी स्टेट, a प्लस कैरेट nth टाइम, दैट इज a प्लस कैरेट टू द पावर n sin naught एज अ फंक्शन ऑफ x. एंड इसकी जो एनर्जी होगी हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, शुड बी n प्लस हाफ h बार ओमेगा. क्यों? क्योंकि यू नो इट कि जो मेरी फर्स्ट ग्राउंड, जो मेरा इनफैक्ट ओनली ग्राउंड स्टेट होता है, हाफ h बार ओमेगा इसकी एनर्जी वैल्यू. तो अगर मैंने n टाइम्स इस a प्लस कैरेट को यूज किया एंड आई रीच टू द nth स्टेशनरी स्टेट, दैट इज psi n एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे पता है कि एक बार व्हेन आई जंप टू अ हायर स्टेप ऑन दिस क्वांटम लैडर, कि एक बार मैंने ये a प्लस कैरेट यूज किया तो मुझे नेक्स्ट स्टेशनरी स्टेट मिलता है, एंड ये नेक्स्ट स्टेशनरी स्टेट के बाद h बार ओमेगा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है. So if the first has half h bar omega, the second will have half plus 1 h bar omega, the third is going to have half plus 2 h bar omega. हर बार we go to the next stationary state, the next excited state, हमें half h bar omega एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है. So that is कि तब nth stationary state के पास n plus half h bar omega एनर्जी होनी चाहिए. Now what will proceed with next is कि determine this normalization constant और normalization factor, क्योंकि हमारा इक्वेशन एक complete solution नहीं हो सकता जब तक हमें नहीं पता ये normalization factor है क्या. अदरवाइज हमें जितनी जो भी स्टेशनरी स्टेट चाहिए साइन नॉट हमारे पास ऑलरेडी होता है, जो भी स्टेशनरी स्टेट चाहिए उतने टाइम्स हमें a प्लस कैरेट यूज करना है. बट व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर? अगर मैं चाहूँ, जैसे मान लो मैंने psi1 को इवैल्यूएट करने की कोशिश की या फिर psi2 को, सो आई कैन एक्चुअली सॉल्व दिस, आई कैन यूज दिस a प्लस कैरेट 1 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑन साइन नॉट. मैं यूज कर सकता हूँ एंड एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ एंड फिर उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलरली नॉर्मलाइज कर सकता हूँ, एंड दैट इज पॉसिबल. लेकिन अगर मुझे आई वांट टू कैलकुलेट द 100th स्टेशनरी स्टेट, सो एटलीस्ट इन प्रिंसिपल मैं a प्लस कैरेट को 100 टाइम्स यूज कर सकता हूँ साइन नॉट एंड आई कैन गेट द 100th स्टेशनरी स्टेट. वेल इन दैट पर्टिकुलर केस अगेन मुझे फिर से इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा एंड a100 कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वी नीड अ कंप्लीट इक्वेशन इन इट्स ओन सेल्फ जो कि मुझे इन टर्म्स ऑफ n नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बता सके. दैट इज व्हाट वी आर पर्टिकुलरली गोइंग टू डू. तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू बी एज्यूमिंग कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, फॉरगेट दैट फॉर एन इंस्टेंस
जब मैं a plus caret on some stationary state psi n यूज करता हूँ, I get to a higher stationary state, that is psi n plus 1. Now I do so with a extra constant. This is a proportionality constant Cn. So I have Cn times psi n plus 1. मैंने ये assume किया. When I want to go down by a stationary state, that is a minus caret psi n. So that is a particular constant dn psi n minus 1. तो मैंने दो कांस्टेंट Cn एंड Dn को इंट्रोड्यूस कर दिया कि दीज आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स इन दीज रिलेशंस, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो होने चाहिए. a plus caret psi n should be proportional to psi n plus 1. Otherwise, if it is not, how can it even give you the next solution? तो ये proportional होने चाहिए, and so I introduce these two proportionality constants. Now what we are going to do is assume a particular theorem, जो कि मैं यहाँ पे prove नहीं करने वाला हूँ. I'm not actually going to prove this thing to you. That is an integral of fx conjugate a plus or minus caret g as a function of x, right here, dx. अब यहाँ पे it is actually multiplied over here, can be written as equal to the integral of a minus plus caret fx. So I'm not writing f as a function of x. Let's just assume it is a function of x. Conjugate you have gx over here dx. अब ये एक थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा का. आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, लेकिन अगर आप a प्लस कैरेट को देखते हो, you can expand this operator as it is in terms of the position in the momentum operator, then you will get to see a theorem actually true है. You can prove this theorem really easily, but we are not going to invest our time into that. Rather continue assuming this theorem that we have written right here is true. तो उस केस में I can say that the integral of a plus minus caret psi n times में आपका हो गया conjugate a plus minus caret psi n dx. किसके इक्वल होना चाहिए? If I write this a plus minus caret psi n as f and psi n as g, so I can write this must be equal to the integral of a minus plus caret a plus minus caret psi n times psi n itself dx, and you have a conjugate here. तो मुझे ये पर्टिकुलर इक्वेशन मिलता है. उसके अलावा व्हाट आई गेट इज कि अगर मैंने ये यूज किया दिस वन इक्वेशन, इनफैक्ट दिस वन इक्वेशन एंड दिस वन इक्वेशन, मुझे पता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सेज कि फॉर द nth stationary state the Hamiltonian operator gives you the corresponding energy times the stationary state. So I get to know that h bar omega and a plus caret a minus caret plus half equals what it equals en. अब en को मैं n plus half h bar omega लिख सकता हूँ. If I cancel out the h bar omega from both sides of the equation, and यहाँ पे मेरे पास psi n भी है. Actually I also have psi n both the sides, so it's not like psi n cancels, क्योंकि हमें पता है psi n is operating on the two. तो यहाँ पे इस on one of it, यहाँ पे इस पे ऑपरेट करें, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, so you cannot cancel it out. लेकिन half psi n and half psi n को कैंसिल किया जा सकता है. What you in the end get is कि a plus caret a minus caret psi n should equal n times psi n. वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे a minus caret a plus caret minus half किया होता, so in that particular case we would say यहाँ पे हो गया minus half psi n, it goes to the other side, half h bar omega दोनों साइड से फिर से कैंसिल है, you'll have n plus half, that is a minus caret a plus caret psi n should equal n plus 1 psi n. तो a plus caret a minus caret psi n is equal to n psi n, a minus caret a plus caret psi n equals n plus 1 psi n. मैंने इसी चीज को a minus caret a plus caret minus half के फॉर्म में लिखा. Then अगर हमें इतने इक्वेशंस मिल गए, we can just proceed forward with this and we can try to solve these things. अब देखो यहाँ पे psi n a plus caret minus a plus caret या फिर a minus caret psi n है. Now the Schrodinger equation gives you the solution. The time dependent Schrodinger equation will give you the most general form of a wave function. Even time independent Schrodinger equation जब हम लोग solve करते हैं, we get these stationary states, तब यहाँ पे इनके हम लोग exponentials of time multiply करते हैं and try to form a general solution.
तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑल्दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट द स्टेशनरी स्टेट्स देमसेल्फ नीड नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट्स अगर आप देखो तो जनरल सॉल्यूशन तो क्लियरली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर स्टेशनरी स्टेट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको मिल भी रहे हैं, सो इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट देम टू एक्चुअल रियल नंबर्स, ऐसा पॉसिबल है इफ यू वांट इट फॉर सिंप्लिसिटीज सेक ऑफ कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर ऑफ कोर्स रियल नंबर्स, और एटलीस्ट वी वांट देम टू बी रियल नंबर्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स है सो वी कैन टर्न देम इनटू रियल हाउएवर वी वांट। इनका रियल पार्ट ही मैटर करता है, एंड सिंस इनका रियल पार्ट ही मैटर करता है सो इसका कॉन्जुगेट टाइम्स दिस शुड बी द मॉड्यूलस ऑफ दिस थिंग स्क्वेयर्ड। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मैंने a प्लस कैरेट यहाँ पे यूज किया, सो आई कैन ऑल्सो यूज दिस इक्वेशन एज वेल। तो a प्लस कैरेट साइन सी एन साई n प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, सिंस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं मॉड ऑफ दिस टर्म स्क्वायर, सो इट शुड बी द इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल मस्ट इक्वल मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर द इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ साई n प्लस 1 स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल इस चीज के इक्वल होना चाहिए बाय दिस इक्वेशन, एंड दिस शुड इक्वल दिस इंटीग्रल, जो कि इन टर्न किसके इक्वल होना चाहिए, a माइनस कैरेट a प्लस कैरेट साइन conjugate with sin dx, इसका इंटीग्रेशन। तो आई विल हैव दिस थिंग एज n plus 1 sin, and then you have a times of sin, that is mod of sin the square and an individual n plus 1, so when n plus 1 integral mod of psi n plus 1 rather psi n only square dx। अब हमें पता है कि ये स्टेशनरी स्टेट्स नॉर्मलाइज्ड है because they are excited states of course। हम लोग excited states की बात करें so they must be normalized and they definitely have these definite energies that allow them to be normalized। तब ये चीज मेरी 1 होनी चाहिए and ये चीज भी 1 होनी चाहिए because I am integrating it all over the space। तो अगर ये 1 है ये 1 है, मुझे क्या पता चला that this constant equals the under root of n plus 1। Similarly, I could do the same with a minus caret sin over here, with a minus caret sin over here, and I would get कि ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए mod of dn square integral mod psi n plus minus 1 square dx, that should equal this integral over here, and I have a plus caret here, a minus caret here, sin conjugate। तो ये चीज मेरी इक्वल हो गई n integral mod psi n square dx। Now I am again integrating it all over space, so you have these two wave functions or stationary states as normalized। तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, and you'll have dn equals the under root of n। तो अगर मुझे cn and dn मिल गया as roots of n plus 1 and n respectively, I can say कि मेरा जो psi n plus 1 होता है, psi n plus 1 होता है, this should equal the 1 over root of n plus 1 of times a plus caret psi n, and similarly psi n minus 1, if it is yes, should equal the 1 over under root of n times a minus caret psi n। तो मुझे ये दो इक्वेशंस मिले हैं। Now what I can see is a very beautiful kind of thing from these two particular equations, कि जब मैंने इवैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ by putting in actual numbers into it, by calculating actual stationary state, not the nth stationary state but the second stationary state and the third and the fourth stationary state, मुझे पता चलता है कि मेरा जो psi 1 होना चाहिए that should be basically n क्या है, यहाँ पे 0 है क्योंकि psi 1 is basically 1 over here, that is n plus 1, तो n क्या हो गया, 0 हो गया। So I need to put in psi 0 over here to get a psi 1 over here। तो n मेरा 0 है, it is 1 over square root of 1, that's 1 clearly। So psi 1 should be a plus caret psi naught, but what is psi 2, that's the question। This psi 2 should be 1 over root 2 and times में आपका हो गया 1 over root 2 times में a plus caret psi 1। a plus caret psi 1 तो मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ as a plus caret of a plus caret psi naught, so it can be written as 1 over root 2 a plus caret square psi naught। And similarly if I try to calculate psi 3 from over here, so I will write this as 1 over, you have 2 over here, you have 1 over there,
1/√3 a प्लस कैरेट साई n, तो ये मेरा साई 2 हो गया। अब साई 2 मैंने कैसे लिखा, एज 1/√2 a प्लस कैरेट स्क्वेयर साई नॉट, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/√3 टाइम्स 2 a प्लस कैरेट क्यूब साई नॉट। तो मैं इन्हें सारे इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट समहाउ गेट दिस इक्वेशन एंड नो व्हाट माय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज। तो मुझे एक यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है कि साई 1 तो मेरा ये हो गया, इसके हिसाब से साई 2 1/√2 ऑफ दिस टर्म होना चाहिए, साई 3 मेरा 1/√3 टाइम्स 2 टाइम्स दिस टर्म होना चाहिए। एंड क्लियरली जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन दिस रिपिटेंस वी कैन टेल कि साई 4 क्या होगा, साई 4 मस्ट इक्वल 1/√4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 a plus caret to the power 4 psi naught. Similarly, psi 5 will be 1 over the under root of 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Alright, even there's no need to actually write times 1, but to represent this function that I'm going to be telling you, not exactly a function, but this operation. So times में a plus caret to the power 5 psi naught. And this is nothing but the factorial of this number, the factorial of this number that corresponds to the excited state that you're trying to solve for. तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि अगर यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेशनरी स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश किया और एक्चुअली फोर्थ स्टेशनरी स्टेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि पहला स्टेशनरी स्टेट इज द जीरोथ स्टेट राइट हियर, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज एक्चुअली द सेकंड स्टेशनरी स्टेट. So if I try to calculate the third excited state, then I have 1/√3 factorial. If I calculate the fourth, I have a 1/√4 factorial. So if I calculate the nth stationary state, or rather the nth excited state again, so I should have a 1/√n factorial. And ये जो particular चीज है a plus caret, ये कितनी बार हमें करना है, that is n times, क्योंकि थर्ड पे 3 times, फोर्थ पे 4 times, क्योंकि हर बार वी आर ट्राइंग टू ऐड एन एक्स्ट्रा ए प्लस कैरेट, हम लोग एक और बार ए प्लस कैरेट यूज कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली गेटिंग. एंड मुझे क्या पता चला कि साई एन देन शुड इक्वल 1/√n फैक्टोरियल, 1/√n फैक्टोरियल टाइम्स में हो गया ए प्लस कैरेट टाइम्स, इनफैक्ट ये साई एन भी नहीं है, दिस इज साई एन प्लस 1. Psi n plus 1 is it? No, let's just write it as psi n only. तो यहाँ पे आपका psi naught हो गया and you are doing this n times. तो ये आपको basically equation मिला है. Now if we look at this equation, you just have the same expressions again, except कि यहाँ पे अभी भी मैंने एक normalization factor छोड़ रखा था, but now I have actually solved it and मुझे पता चला कि normalization factor depend करता है आप कौन सा stationary state देख रहे हो, कौन सा एक्साइटेड स्टेट और मे बी द ग्राउंड इटसेल्फ पे देख रहे हो एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट, एंड उसी पे डिपेंड करते हैं द फॉर्म ऑफ द इनवर्स ऑफ द रूट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट एक्साइटेड स्टेट यू आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट एवर एक्साइटेड स्टेट यू वांट टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट है एंड ये इसकी कितनी एनर्जी होती है, this has an energy half h bar omega. Then you have the excited states and that is the nth excited state is represent this as this much in terms of the ground state, and this corresponds to energy n plus half h bar omega, and that's all there is to the harmonic oscillator. क्योंकि एक क्वांटम प्रॉब्लम यही होता है कि अगर मुझे बेसिकली पहले से पता है कि what the wave function at x and 0 at x and 0, that by that I mean कि how the wave function depends on the position on all this space at time t equals 0, तब मैं कैसे टाइम t equals t इस wave function को कैलकुलेट कर सकता हूँ. that is what you call the generic quantum problem. Now the thing is कि at psi at x and t कैलकुलेट करने के लिए हमें ये स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन हमारे पास होना जरूरी है. तो इन दी एंड अगर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने तो हमें वेव फंक्शन एट जनरल वेव फंक्शन एट टाइम t equals 0 ही पता होना चाहिए. एंड इफ यू हैव द जनरल वेव फंक्शन एट टाइम t equals 0 एंड यू हैव योर स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस जो कि हम लोगों ने किया है, एंड देन यू आर ऑल डन फॉर. जो भी आपका प्रॉब्लम इट इज एक्चुअली इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्व है, बिकॉज इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम व्हेन यू कैन नॉट सॉल्व इट, लेकिन इन प्रिंसिपल एटलीस्ट. अब हमारे मैथमेटिकल मेथड्स हमारे एग्जाम में
कितनी डिफिकल्टी कितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वो सारी अलग बात है। बट एक्चुअली इन प्रिंसिपल आपके पास अब सारे टूल्स हैं, सारी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है टू सॉल्व दिस वॉट एवर प्रॉब्लम फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट यू कैन एक्चुअली गेट फॉर, क्योंकि ऑल यू नीड इज द वेव फंक्शन एट टाइम t इक्वल 0, जो कि आपका अलग अलग क्वेश्चंस में या फिर प्रॉब्लम या सिचुएशंस ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में इटसेल्फ अलग होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर these are the energy values and the stationary states, and that was all for today's video of mine, and thanks to our viewers.